हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सभी के सभी? तो आज सुबह सुबह ही आ गया यार, क्योंकि रात को भी आ सकते हैं, बट आज ये बुक ख़त्म करनी है ताकि हम रात को अच्छे से बुक कंप्लीट कर सकें। तो आज का चैप्टर है मैग्नेट, बी ए मैग्नेट इन योर लाइफ। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, बी ए मैग्नेट इन योर लाइफ। नाम से ही सुनने में अच्छा लग रहा है। बी ए मैग्नेट इन योर लाइफ। आई एन कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसे। The law of attraction states that whatever you focus on, think about, read about and talk about intensely, you are going to attract more of into your life. अब क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? जो चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करते हो उसके बारे में सोचो, उसके बारे में रीड करो, उसके बारे में बात करो, और यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट मोर ऑफ इनटू योर लाइफ। मतलब अगर आप पैसों के बारे में बात करते हो, अगर आप अपने गोल्स के बारे में बात करते हो, तो उतना ही आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो। Dubbed as the queens of all media, the famous actor, talk show host, the philanthropist Orpha Winfrey is ranked as one of the richest self-made women. It is quite a leap for someone who come from an extremely poor background and who was abused as a child and rejected by many people. Today, she is not only one of the richest people in the world, but she is also loved and respected by all. Given the conditions she was brought up in, could she have believed of becoming the Orpha Winfrey as we know today? Well, the answer is yes, she did. Orpha is a firm believer in the law of attraction. Orpha एक firm believer है जो कि law of attraction को मतलब बहुत अच्छे से मानती हैं. She says some people doubt that your thoughts create reality for you. आपके जो thoughts हैं वो reality बनाते हैं. It doesn't if you just sit around thinking I want something, but there is no question if the energy and the vibrational frequency is correct, is in sync with what is to come your way, and that there is a space that you create that allow that to happen. When she read the book, the color purple, she ate, slept and dreamed the book. She was so obsessed by the story that she developed a strong desire to act in an adaptation of the book. Ofra intensely visualized herself acting in the movie every walking moment. In 1985, she got her first casting call ever to audition for a movie. She was amazed to know that the movie was The Color Purple. She was elated as she had moved a step closer to her dream. However, after the audition, she didn't get a call back for months. She cried and prayed to get that phone call. She then took it upon herself to call the casting director, who completely wrote her off and told her that a real and more well known actress, Alfred Woodard, had just auditioned for the role. Orphan could see her dreams slipping away. अब क्या हुआ? After the audition, she didn't get a call back. मतलब उन्होंने ऑडिशन दिया, उनको कोई कॉल बैक नहीं आया. She cried and prayed to get that phone call. वो बहुत रोई और प्रे किया कि मुझे वो कॉल आ जाए, बट नहीं आया. She then took it upon herself to call a casting director, who completely wrote her off and told her that a real and more well-known actress, Alfred Woodard, had just auditioned for the role. Orphan called her dream slipping away. With the passage of time, she began praying for surrender to the peace of letting go and believe that everything happens for a good reason. और एक टाइम बाद उन्होंने सोचा कि ठीक है यार, चलो प्रे करना उन्होंने छोड़ दिया. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है. In an interview, Orphan recalls the day when she was distressed over the situation. She started singing, I surrender all, I surrender all, I surrender all, I surrender all. All
to thee, my blessed Savior. I surrender all. And as she did so, she got a call from Steven Spielberg, the director of the movie The Color Purple, telling her that she had gotten the part. अब क्या हुआ जब उसने कहा कि मैं चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आई सरेंडर, मतलब मैंने भगवान को सब कर दिया है सरेंडर, कोई बात नहीं, जो होगा अच्छे के लिए होगा। फिर उसी के बाद उनको कॉल आता है उस मूवी के लिए जिसके लिए उन्होंने ऑडिशन दिया था, और बोला गया कि आप इस मूवी के लिए एलिजिबल हो, आप इसमें पार्ट कर सकते हो, पार्ट मतलब आपको इसमें पार्ट मिल चुका है। द रेस्ट दैट फॉलोड इज हिस्ट्री, और जो बाकी हुआ वो सब हिस्ट्री बन चुका है। शी रोज टू फेम एंड द सक्सेस ऑफ द मूवी बिकम अ कैटलिस्ट टू हर acclaimed talk show. She truly believes that she attracted this into her life. Whatever you give the most energy to is pulled towards you. The concept that works around you around this is very interesting. Let's say that you want to buy a particular watch. मतलब आपको एक वॉच खरीदनी है पर्टिकुलर, सडनली यू विल स्टार्ट सीइंग दैट वॉच एवरीवेयर, उसी वॉच को आप हर जगह देखोगे, दैट वॉच वॉज देयर बिफोर, बट बिकॉज यू डिसाइडेड टू बाय वन एंड बिकॉज यू हैव दैट इमेज इन योर माइंड, यू बिकम मोर अवेयर। ठीक है, जब भी आप उस वॉच को देखते हो हर जगह दिखने लग जाती है, फिर उसके बाद आप और भी ज़्यादा अवेयर हो जाते हो उन चीज़ों से। आवर माइंड इज bombarded with million of images and sounds every day. This can be become quite overwhelming. To counter this, we have a defense mechanism which only allows things into our minds for which we have created a pathway. There's a guard. There's a guard working 24 into 7. एक second, let me wait. Okay. So, where were we? We were in the this statement. There is guard working 24/7. जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो चौबीसों घंटा काम करते हैं at the every point to our mind, who grants permission only to those things that are worthy of our attention. As a result, when we consciously thinking of something we want in our life, be it good health, good relationship, more wealth, a new house, or a new car, we attract the situation, thoughts, people, and the resources that are required to make it happen into your life. तो अब क्या होता है, जब भी हम अपने बारे में सोचते हैं, मतलब कुछ अच्छा सोचते हैं, अच्छे रिलेशनशिप के बारे में, अच्छे हेल्थ के बारे में, अच्छे वेल्थ के बारे में, एक नए घर के बारे में, नई गाड़ी के बारे में, तो हम लोग उसको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये कुछ नहीं है, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वेदर वी आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एट वर्क इन आवर लाइफ्स. Many times we hear people saying things like, oh, it's such a miracle. I was looking for this book for so long and one of my friends just gifted it to me. What exactly is the law of attraction and how does it work? The law of attraction is based on very laws that govern the universe. The Earth and all the other planets in the solar system work on the law of attraction. The Earth rotates on its own axis and it revolves around the Sun along with the other planets. This is possibly only because of the force of attraction between them. Every visible objects attract each other according to Newton's law of universal gravitation. Newton's law of gravity defines the attractive force between all objects that possesses mass. Understanding the law of gravity, one of the fundamental forces of physics, offers profound insight into the way of our universe function. The amount of gravitational pull that something possesses is proportional to its mass and distance between it and another object. This explains why we are pulled towards the center of the earth rather than towards the sun or another person. This force of attraction also applies to our thoughts. Therefore, whatever you want will come to you and based on the mass distance of your thoughts about it. तो जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ आपके पास अट्रैक्ट होगी जल्द से जल्द, मानो या ना मानो। ठीक है, एक सेकेंड।
तो हम लोग आते हैं, be it positive or negative. If you are constantly thinking of what you want, you will increase its mass, which will start attracting the object of your desire towards you. तो जो चीज़ आपको चाहिए होती है ना, जो चीज़ आपको चाहिए होती है उसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हो तो वो चीज़ आपकी तरफ और अट्रैक्ट होती है. Initially, what you want may be out of sight, but as you continue increase its mass, the distance will shorten. So it is not outlandish if we say that thoughts and things attract each other. Those who have attracted success into their life have used the same law. Knowingly or unknowingly, they think thoughts of abundance, and they do not allow any other negative thoughts to take root in their minds. Their predominant thoughts are of success, whether they are aware of it or not. Their predominant thoughts of abundance are what brought abundance to them. This is the law of attraction in the action. Like attracts like, the hence the only way to manifest something is your outer world is to improvise and amend your inner world, which includes your inner vibrations, thoughts, and emotions. The law of attraction is the most misapplied of the natural laws. Many people think that they must intensely desire and focus on what they want and think of nothing else. But just sitting and wishing isn't going to accomplish anything. I would like to share with you a story I read a while back. There was once a poor man who was honest and hardworking. He desired to be rich so that he could provide a better lifestyle to his family. He was working as construction worker and was not sure of how he would achieve his dream. He thought the easiest way to become rich is by winning a lottery. वो कह रहे easiest way अमीर बनने का क्या है, जब आप एक लॉटरी जीतते हो. एंड देयरफॉर ही डिसाइडेड टू प्रे टू गॉड बिफोर रिटायरिंग टू बेड. एवरी नाइट ही वुड नील डाउन बिसाइड्स हिज बेड एंड प्रे, गॉड प्लीज़ हेल्प मी विद विन द लॉटरी. अब वो कह रहे कि उसने हर दिन भगवान से प्रे किया अपने नील्स डाउन करके कि भगवान प्लीज़ मेरी लॉटरी लगवा दो. गॉड वॉज ऑल्सो क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय हिज डिवोशन एंड डेडिकेशन. दिस वेंट ऑन फॉर almost a year. एक साल तक उसने प्रे किया एक ही चीज़ के बारे में. One night after praying, when he was sitting on his bed, God appeared in the front of him, looking annoyed. God said, I want to help you, my child, but first go and buy a lottery ticket. Though it is a funny story, it concludes with an invaluable lesson. You need to take action for the outcome you desire. If you don't take the first step, how will you reach towards your goal? अब देखो कितनी अच्छी बात कही है. इसमें कहा है कि एक बंदा था, उसने भगवान से प्रे किया. मतलब सबसे इजी तरीका क्या है आपको अमीर बनने का, कि एक लॉटरी टिकट खरीदो और उसका लॉटरी आपका लग जाए तो आप विजेता बन जाते हो और एक ही दिन में करोड़पति बन जाते हो. तो अब उस बंदे ने क्या किया, रोज़ भगवान से बोला, भगवान प्लीज़ प्लीज़ मुझे वो लकी बना दो, मैं लॉटरी टिकट मतलब मेरा लॉटरी टिकट निकल जाए, लॉटरी टिकट निकल जाए. एक साल तक उसने मेहनत की, भगवान से मदद मांगी, हेल्प कि मेरा लॉटरी टिकट निकल जाए. तो भगवान एक दिन उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं कि बेटा सब तो ठीक है, तो गुस्से में क्यों लग रहा है. कह रहा नहीं है, मैंने इतनी प्रे की, आप मतलब आपने सुनी नहीं मेरी. कह रहे वो सब तो ठीक है बेटा, पहले तू वो तो कर ले, तू पहले लॉटरी टिकट तो खरीद ले. तो मतलब आपके जो गोल्स हैं उसके टूवर्ड्स आपके कुछ एक्शंस भी होने चाहिए. ये नहीं कि बैठे बैठे हाँ मन से सोच लिया कि भाई आज तो मैं लैम्बोर्गिनी खरीद लूँगा. ऐसे नहीं होता. उसके टूवर्ड्स लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए कुछ स्टेप्स चाहिए होंगे जो कि आपको करने होंगे, है ना. मेहनत तो करनी पड़ेगी. ऐसा थोड़ा ना कि बैठे बैठे आपको सारी चीज़ें भगवान ही दे दें. भगवान भी कहते हैं हम मदद करेंगे पर पहला स्टेप आप रखो. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट म्यूजिक बट हु ड्रीम्स टू बिकम अ ग्रेट कंपोजर शुड बी रेडी टू स्टडी एंड लर्न म्यूजिक टू अचीव हिज गोल. Applying the law of attraction can make achieving a goal easier and faster. To manifest it in the real world requires taking action. There is a very precise way to manifest what you want. It begins with the seed of an idea. That part is easy. The harder part is getting your inner gardener, the subconscious mind, to believe that the seed can grow. Without belief, the gardener will do nothing, saying the seed won't grow. Why should I waste my energy on it? तो अब होता है ना कि आप कुछ भी कर लो, आपका वो ग्रो नहीं होगा जब तक आप ठानोगे नहीं, है ना. आपने सोच कुछ और रहा है, कर कुछ और रहे हो, तो ऐसे कैसे होगा. देयर इज़ वेरी प्रिसाइज वे टू मैनिफेस्ट वॉट यू वॉन्ट. इट बिगेन्स विद द सीड ऑफ एन आइडिया. दैट पार्ट इज ईजी.
The harder the part is getting your inner gardener, the subconscious mind, to believe that this seed can grow. Without belief, the gardener will do nothing, saying, this seed won't grow. Why should I waste my energy on it? If the gardener believes the seed can grow, he will expect it to do so. जब गार्डनर ने सोचा है कि ये पौधा उगेगा तो वो उगेगा चाहे कुछ भी हो जाए. He will imagine the seed growing and bearing fruit. जब वो सोचता है कि ये सीड उगेगा और इससे फ्रूट निकलेगा तो वो सीड ग्रो करता है. एंड सो ही विल कंपेल टू टेक एक्शन टू मेक श्योर दैट द सीड मैच्योर्स. अब जब वो सोचता है ना कि यार मैं ये पेड़ उगाऊंगा, इसके फल फ्रूट्स खाऊंगा, जब ये सारी चीज़ें वो सोचता है तो वो उसके लिए एक्शंस करता है. कुछ एक्शंस वो करता है जिससे ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है. हमेशा बस इमेजिन ही नहीं करना है, उसके लिए आपको काम भी करना है. ठीक है. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द गार्डनर बिलीव्स एंड एक्सपेक्ट्स बट does not take action. Nature's might withhold rain and the seed would dry out. अब जब आप किसी चीज़ को मन से नहीं करोगे तो ऐसा होगा जैसे आप पेड़ उगा रहे हो, अचानक से बारिश आ गई और वो आपका ट्री जो उगने वाला था वो ख़राब हो गया. इंटेंस हीट कुड वाइदर द लीव्स. मतलब आप ऐसा हो गया मौसम की पेड़ उगने के बाद भी आपकी पत्तियाँ जल के राख हो गई, इतनी गर्मी हो गई. फ्लड्स कुड वॉश अवे द सीड्स. फ्लड आ गया, सीड्स उड़ गए. इंसेक्ट्स में फीस्ट ऑन द लीव्स. इंसेक्ट ने पत्तियाँ खा ली. एंड so on and so forth. Without constant nourishing the seed, fate is left to chance. तो बहुत अच्छा फार्मर और सीड का एग्जांपल दिया कि अगर कॉन्टीन्यूसली अगर आप उस पर काम नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा. कभी कीड़े खा जाएंगे, कभी फ्लड आ जाएगा, कभी सनलाइट ज़्यादा हो गई तो दिक्कत हो जाएगी. When what you creatively visualize reach your subconscious mind, you will receive bursts of inspiration, spoken or visual messages, powerful urges and hunches. It is vital that you take action on those instructions without delay. Most of the messages you receive from our subconscious are time sensitive. That doesn't mean you have to drop everything you are doing and act on every hunch you get. But don't allow inertia to set in. Take the first step. पहला step लो. If you don't take action, you are essentially saying no thanks to your subconscious mind, and this gets stored there as a belief that a particular approach is not wanted. In action, send the message that you are not interested. Take a beginner attitude and allow your inner guidance to show you the way. तो देखो कितनी अच्छी बात की है. अगर आप उसके खिलाफ मतलब अगर जो आप चाहते हो उसके लिए आपने एक्शंस नहीं किए तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करेगा. वो ये मैसेज भेजेगा कि ये तो उस काम के रिगार्डिंग कुछ है मतलब करना ही नहीं चाहता है. तो वो आपका एक दिमाग में बन जाएगा कि हाँ ये इसका गोल है वो इसकी तरफ नहीं जा रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, शायद ये इम्पोर्टेंट नहीं है. तो वही चीज़ है, अगर आप अपने गोल के थ्रू बढ़ना चाहते हो तो उसके टूवर्ड्स कुछ एक्शन होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं, उसे फॉलो करना होगा, है ना. इफ़ यू वांट टू बिकम अ फुटबॉलर तो कैसे बनोगे? एक अच्छी कोचिंग लेकर, है ना. अगर डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले आपको पढ़ाई अच्छे से करनी होगी, है ना. तो वो सारी चीज़ें. मैपिंग आउट a plan to achieve your goals using your conscious mind will limit the possible outcomes. अगर आप कभी कभी ऐसा करते हो ना, कुछ प्लान बना लेते हो और अपने कुछ गोल्स बनाने हैं, कॉन्शियस माइंड जो आपका लॉजिकल माइंड है उसके हिसाब से आप कर देते हो, पर आपके जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो होते तो हैं, आउटकम्स आते हैं बट वो लिमिटेबल होते हैं, मतलब लिमिट होती है उनमें. बट रिमेंबर योर कॉन्शियस माइंड इज रिस्ट्रिक्टेड टू द 5 सेंसेस and your past experiences, and it will not have the infinite knowledge that the subconscious mind has. अब क्या होता है कि वो कह रहा है जो आपका कॉन्शियस माइंड है उसको लॉजिकल बातें समझ में आती है, उसके वो सेंसेस के ऊपर वो करता है, रिलायंट है वो उसके ऊपर. ठीक है, मतलब टोटली डिपेंडेबल है आपके सेंसेस के ऊपर. आपको दिखाई दे रहा है तो आप मानोगे, नहीं दिखाई देगा तो नहीं मानोगे. 2+2 होता है क्योंकि आपके नॉलेज में है, आपने बचपन से 2+2=4 पढ़ा है. आपने कभी ये नहीं पढ़ा 2+2=5 भी हो सकता है. तो हमारा कॉन्शियस माइंड लिमिटेड है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है. बट हमारी जो इमेजिनेशन है जो कि हम सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके करते हैं वो मतलब इन्फिनाइट है, टोटली इन्फिनिटी है इमेजिनेशन हमारी.
यू शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द योर इंस्टिंक्ट्स, आपको अपने इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से काम करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल माइट लिमिट द ऑप्शन ऑफ लीडिंग अ हेल्थियर लाइफ बाय फोकसिंग ऑन फैट डाइट्स, magic pills, because they don't believe or are unaware of the unlimited possibilities that are available to live a healthy lifestyle using the subconscious mind. बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि हेल्दी लाइफ को लेने के लिए बहुत तगड़ी तगड़ी डाइट लेते हैं, मैजिक पिल्स लेते हैं जिसको खाते हैं बॉडी बन जाएगी या फिर दिमाग को रिलैक्स हो जाएगा. कुछ लोग एंटी डिप्रेसेंट खाते हैं, कुछ ये खाते हैं, कुछ वो खाते हैं ताकि खुश रह सकें, है ना. पर उन सबको ये नहीं पता कि आप लोगों के पास इनबिल्ट पावर है अपने आप को खुश रखने का, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड. द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट आर ऑलवेज देयर, बट many times, be it due to fears, doubt or lack of self confidence, many stop from taking the necessary action. See the law of attraction as a lifestyle and apply it continuously, not just when you need something. In that way, you will change every aspect of your life, conquers your fears, take action and involve yourself with situations which are in the same direction as your goals. Many of us fail at manifesting because we do not realize we can control our thoughts and feelings. Your thoughts and feelings give you the power to energetically align yourself with what you want to bring into your life. It's not always easy, however, it is something you can develop with practice. गुड फीलिंग्स कम फ्रॉम गुड थाट्स, जो आपकी गुड फीलिंग्स है वो आपके गुड थाट्स के साथ आती है, वाइल बैड फीलिंग्स कम फ्रॉम बैड थाट. अगर आप गलत सोचते हो तो गलत फीलिंग आएगी. बाय कंट्रोलिंग योर फीलिंग्स यू कैन मेक श्योर यू ऑलवेज हैव द राइट थाट्स. जब आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं वो सारे अच्छे हैं. हेलो विश्वनाथवी, हाउ आर यू, वेलकम बैक टू द चैनल. आप आए तो थोड़ा जान में जाना ही. कैसे हो, खाना वाना हो गया? When you are feeling bad, you know your thoughts are going in the wrong direction. For example, many people struggle in manifesting success because they sabotage themselves. They approach opportunities with an air of desperation from a place of lack. But that approach doesn't work because they are not aligned with that they desire. They want success, but their thoughts are saying, I can't have success. That inner inflict spells disaster for their dreams. You can turn this downward spirals into an upward spiral very quickly. Start thinking about the day you got your diploma, first paycheck, or some other event that brings a smile to your face. Make sure you bring up those good thoughts and then start thinking about all the ways of can achieve what you want. आप कह रहे हैं you can turn this downward spiral into the upward spiral very quickly. Start thinking about the day you got your diploma, first paycheck or some other event that brings smile to your face. आप हर उस चीज़ के बारे में सोचो जो कि आपको आपके चेहरे में मुस्कुराहट लाती है. पहली कमाई, आपका जब डिप्लोमा कंप्लीट हो गया उस टाइम पे जो खुशी, और पहली बार खाना बनाया टेस्टी बना उसकी खुशी. कुछ भी चीज़ ऐसी करो जो कि आपको मतलब खुशी देती हो, उसके बारे में सोचना है. मेक श्योर यू ब्रिंग अप दोज गुड थाट्स एंड देन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल द वेज यू कैन अचीव वॉट यू वॉन्ट. और इन सबको दिमाग में रखते हुए आपको याद रखना है कि हाँ, ऐसे मैं अपने आगे भी गोल्स अचीव कर सकता हूँ. राइट देम डाउन, उन चीज़ों को लिख लो. अगर भूल रहे हो तो राइट देम डाउन, इवन इफ नन ऑफ दोज आइडियाज़ आर रियलिस्टिक एट द मोमेंट. उनको भी लिख दो जो रियलिस्टिक नहीं है आपके अभी एट द मोमेंट. अगर आपको लैम्बोर्गिनी लेनी है और अभी रियलिस्टिक नहीं है, बट लिख दो वन डे यू विल बाय द लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस, कुछ भी खरीद सकते हो. और इवन पॉसिबल इन योर करंट वे ऑफ थिंकिंग, नो दिस, वॉट एवर योर माइंड कंसीव्स एंड बिलीव्स इट कैन अचीव. जो आपका दिमाग सोचता है और जो करता है, इट कैन अचीव, वो अचीव कर सकता है. इट्स ओके नॉट टू नो इट ऑल. इट्स ओके टू से आई हैव नो आइडिया हाउ दिस विल वर्क, बट एज लॉन्ग एज यू बिलीव, expect, imagine and feel what you want, you will set the wheels of manifesting into motions. How do thoughts, feelings, and beliefs affect the results of your reality? Trust, good feelings, and happiness are the keys to allowing the law of attraction to work for you. You have to allow yourself to attract the right things by
being happy. When you are happy, the world seems brighter, more cheerful and helpful. जब आप खुश रहते हो तो आपको दुनिया थोड़ा उजाले उजाले से भरी लगती है, ज़्यादा cheerful लगती है, ज़्यादा helpful लगती है. When you are sad, it feels cold, gloomy and lonely. अगर जब आप बुरे होते हो, मतलब उदास होते हो, तो आपको ये पूरी दुनिया थोड़ी सी कोल्ड लगती है, ग्लूमी लगती है, लोनली लगती है, अकेलापन लगता है. विच एटीट्यूड इज गोइंग टू अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट. फील हैप्पी, फील पॉजिटिव अबाउट योर एबिलिटी टू हैव वॉट यू डिज़ायर एंड ट्रस्ट दैट इट विल मैनिफेस्ट. अपने आप पे भरोसा रखना सीखिए एंड यू विल मैनिफेस्ट योर ड्रीम as soon as possible. An analogy to the law of attraction is how a magnet works. It attracts iron but not paper or plastic. अब क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है. आप एक मैग्नेट को देखना कैसे काम करता है, वो अट्रैक्ट करता है आयरन को, सिर्फ आयरन को, ये नहीं पेपर और प्लास्टिक को भी अट्रैक्ट कर रहा है. द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स द सेम वे टू अट्रैक्ट रिसोर्सेज, circumstances and people in your life that can help you become successful, but the magnet works only if its atoms are aligned in one direction. क्या आप बात कही है. देखो वो कह रहा है कि जो जितने भी मैग्नेट्स है वो कैसे काम करते हैं, जब उसके सारे एटम्स एक जगह अलाइन हो. मतलब अगर आपने माइंड में सोचा हुआ है कि ऐसे ऐसे ये काम करना है, इसके पीछे ही अपनी ज़िंदगी दे देनी है, तब जाके वो आप कर पाओगे. अगर वो सारी चीज़ें अलाइन नहीं है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग राइट, है ना. तो आगे बढ़ते हैं. द हायर द परसेंटेज ऑफ एटम अलाइन इन वन डायरेक्शन, द मोर पावरफुल द मैग्नेट बिकम्स. जितने जितने पार्टिकल उसके अलाइन होते हैं आयरन के, उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है आपका मैग्नेट. अ वीक मैग्नेट कैन अट्रैक्ट ओनली स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन बट अ पावरफुल मैग्नेट कैन पुल एन एंटायर बिल्डिंग डाउन. एक वीक मैग्नेट क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़े ही कलेक्ट कर सकता है आयरन के, बट एक बड़ा मैग्नेट एक पूरी बिल्डिंग को गिरा सकता है. भाई विल यू डू लाइव स्ट्रीम ऑफ इंडिया बैडमिंटन ट्रायल्स. बेशन आदमी आप बताओ करूं, क्योंकि ऑलरेडी वो दिखाया जा रहा है, हमारे इंडिया वाले ही दिखा रहे हैं. Bishanath V, I can do it. Let me check the tournament software. Let me check the tournament software. From today, my summer holiday starts. क्या बात है बेशनाथ भी, congratulations, congratulations. बहुत धूप हो रही है, अच्छा हुआ छुट्टी मिल गई. Let me check यहाँ पे कोई स्कोर कार्ड आ रहा है, नहीं आ रहा. ब्रदर यहाँ पे तो 2 ही दिखा रहा है टूर्नामेंट सॉफ्टवेयर में. एक सेकंड रुक जाओ. BWF में देखो क्या. मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि थॉमस कप की डेट चेंज हुई है. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी चेंज. भाई आई एम प्लानिंग टू गो टू इंग्लैंड टू डू द मास्टर. गुड गुड गुड, बढ़िया है बढ़िया है. प्लान करो प्लान करो, अच्छा है, बाहर से पढ़ाई करना भी अच्छा है. A weak magnet can attract only small pieces of iron, but a powerful magnet can pull an entire building down. In essence, attraction works like this. You have to be one that attracts the circumstances, environment, opportunities, and people you need. आपको ऐसा बनना होगा कि आप लोगों को मतलब लोगों को अट्रैक्ट करें अपने से, सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट करें, इन्वायरमेंट को अट्रैक्ट करें एंड अपॉर्चुनिटीज़ को अपने पास लाएं. योर बिलीव हैव टू बी अलाइन, आपके बिलीव को अलाइन होना पड़ेगा. एंड योर डिज़ायर्स, योर एक्सपेक्टेशन हैव टू मच टू मैच your desires. Your imaginations has to create the most wonderfully compelling, exciting image of what you desire. In this way, you can effortlessly attract what you want.
ठीक है, जब आपकी इमेजिनेशन बिल्कुल सटीक होगी अपने गोल्स की तरफ, तब आप लोग उसे अट्रैक्ट कर पाओगे। जैसे अभी बेशनाथ भी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ इंग्लैंड जाने की, तो आपका गोल बिल्कुल अलाइन होना चाहिए, तब जाके आप ज़रूर पहुँचोगे। आई से एफर्टलेसली बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग what is right for you, when you love every second of every action that you take, it doesn't feel like work at all. It's no struggle, no efforts, but it's not sitting around wishing and hoping. The key is action, fueled by happiness, enthusiasm, good energy, belief, and expectation that what you desire is coming towards you at the speed of thought. ठीक है, जब कोई चीज़ आप करते हो जिसमें आपको मज़ा आता है ना, तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होती। फ्यूल्ड बाय हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड गुड एनर्जी, बिलीव एंड द एक्सपेक्टेशन दैट व्हाट यू डिज़ायर इज कमिंग टुवर्ड्स you at the speed of thought. When your beliefs, expectations, mental images, and feelings are aligned in one direction, they create the pull necessary to attract the right resources. Remember, your doubts are like atoms in a weak magnet pointing in a random directions. If you can replace them with the right beliefs, you can become a powerful magnet pulling in everything needed to achieve success. This principle in practice can attract anything your heart desires. मतलब जो आपको चाहिए, आपके जो दिल को चाहिए, वो तुरंत आपको मिल जाएगा। वेट अ सेकंड गाइस, वेट अ सेकंड। So in the 8th May all the matches will start soon. मतलब बता दूं आपको, टोटल एनर्जीज BWF थॉमस एंड ओवर कप शुरू हो रहा है 8 से 11 तक चलेगा, फिर 12 से 15 तक चलेगा। तो तैयार है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये मैचेस। पहले ग्रुप मैचेस होंगे, फिर राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल्स एंड फर्दर ग्रुप प्लेज, फिर उसके बाद 13 को सेमीफाइनल्स, फिर ओवर कप फाइनल और थॉमस कप फाइनल। वेट वेट वेट, अरे सबको ही बाय दे दी क्या? भाई इंडिया हैज़ चांसेस टू विन थॉमस कप। हाँ, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। माई पेरेंट्स बिलीव दैट आई विल गेट गुड मार्क्स इन टेंथ बोर्ड्स एंड इवन आई ऑल्सो बिलीव इन माई सेल्फ। येस, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स आर बिलीविंग इन यू, तो ये आपकी मेहनत है, वरना हर किसी के पेरेंट्स इतना बिलीव नहीं करते। तो आप मेहनत कर रहे हो अपने गोल्स के तरफ और अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो आप जल्दी से जल्दी इंग्लैंड जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 2 पार्ट हैं, वांटिंग समथिंग एंड हैविंग इट। किसी चीज़ को मांगना और किसी चीज़ को ओन करना। द फर्स्ट पार्ट, वांटिंग, इज़ ईजी, क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला चीज़ है मांगना, वो बहुत ही ईजी है, क्लियर है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इट इज़ योर डिज़ायर, इट मे बी to own a new house or car, or get few $1,000s, or get a new career, or to win the partner of your dreams. The wanting part is just needs to be more vividly visualized. अब जो पहला है आपका, जो आप बनना चाहते हो, तो वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ईजी होता है, क्लियर भी होना चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। द सेकेंड पार्ट इज दैट ऑफ हैविंग इट. You begin by believing that you are already have it, and you feel the happiness or gratitude of it being yours. This positive energy starts to work and attracts even more of that in your life. However, there is an energy that gives rise to that feelings. And if this energy is absent, the intention loses its power. When you want something very badly and you start to vibrate a lack of that and feel pessimistic about not having it, and then you start to attract more of those negative circumstances. These are the principle of the law of attraction. Remember that without taking action, there will be no results. Taking action is the key to manifest your dreams. अब वो कह रहा है कि there are the principle of the law of attractions. Law of attraction के कुछ principle है. Remember that without taking action, there will be no result. अगर आप कोई action ही नहीं लोगे,
आप एक फुटबॉलर बनना चाहते हो, घर में बैठ के नहीं होगा, एक फुटबॉल खरीदनी पड़ेगी और उसको लेकर ग्राउंड में जाना होगा, ठीक है, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। और अगर आपको नंबर 1 फुटबॉलर बनना है तो नंबर 1 कोचिंग सेंटर ज्वाइन करो और मेहनत करो दिन रात, तब जाके बनोगे। बिकॉज आपका जो सपना है उसके टूवर्ड्स अगर आप एक्शंस नहीं लोगे तो कैसे होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो जो चाहते हो उसके टूवर्ड्स एक्शन लेना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पहले विजुअलाइज करो, फिर एक्शन लो और फिर उस मंजिल को पालो। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज श्योर फायर लॉ। It works for everyone. If you are not able to attract what you desire, you need to allow your subconscious mind to give you the guidance needed. अपने subconscious mind को दो पावर जो आप चाहते हो, बताओ उसे कि आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो। भाई इंडिया has chances to win the Thomas Cup. Yes, absolutely right. The good news is that by applying the law of attraction, you start to send positive thoughts and ideas to your subconscious mind and reprogram it. That will help you to believe in yourself and take action despite your possible fears. The law of attraction listen to you subconscious mind. जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की सुनता है। थिंक ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ जीपीएस। आपका दिमाग जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक जीपीएस की तरह है। यू एंटर योर डेस्टिनेशन इन इट एंड इट टेक्स यू देयर। अगर आप उसमें अपनी डेस्टिनेशन डालोगे कि भाई मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे ये गोल अचीव करना है, ये करना है, तो वो वहाँ तक आपको लेकर जाएगा। There would be times when you wonder why it is asking you to turn left when you think, based on reality, that you should be turning right. But if you trust the GPS and let it do its job, it will guide you to your destination. कभी कभी होता है ना कि आपका दिल कहता है कि लेफ़्ट है, आपने नेविगेशन भी लगा रखा है, फिर आपका जीपीएस कह रहा है भाई लेफ़्ट की तरफ ले, और आपको लग रहा है कि राइट की तरफ सही है। अब जब आपने जीपीएस लगाया तो जीपीएस को चलने दो भाई, फिर अपना तेज़ दिमाग मत चलाओ। तो वैसे ही एक बार गोल सेट कर दिया है तो जो फालतू की चीज़ आ रही है ना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं जी नहीं कर पाएंगे, तो इन सारे थॉट्स को हटाना है। जब जीपीएस ऑन कर दिया है, सबकॉन्शियस माइंड ने बोल दिया आप कर सकते हो, तो यू कैन डू इट वेदर वी आर अवेयर ऑफ इट और नॉट। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एट वर्क इन आवर लाइफ। आप मानो या ना मानो, आज रीडिंग इतनी जल्दी 12 AM से 12 PM, हाँ आज ही बुक ख़त्म करनी है ताकि मैं एक बड़ी बुक शुरू कर सकूं। इट इज़ अ वेरी गुड बुक। जिसको स्टॉक मार्केट की नॉलेज चाहिए वो ये बुक पढ़ सकता है, ठीक है। इस बुक को मुझे ख़त्म करना है, उसकी मतलब थिकनेस देख लो, ये 1 महीने से ऊपर जाएगी। वैसे मैं कोशिश करूँगा 1 महीने में ख़त्म करूँ। पढ़ता रहूँगा 5-5, 6-6 घंटे इस बुक को ख़त्म करना है अच्छे से समझ के, ठीक है। तो मेन मेरा मोटिव है इस बुक को पढ़ना और अच्छे से पढ़ना और इसको अपनी लाइफ में लाइफ में अप्लाई करना, ठीक है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, द बाइबल ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट और बाहर की स्टॉक मार्केट की एक बाइबल है, और बाइबल पढ़नी है। गुड फीलिंग्स कम फ्रॉम गुड थॉट्स वाइल बैड फीलिंग्स कम फ्रॉम बैड थॉट्स। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, गुड थॉट्स विल अट्रैक्ट गुड थिंग्स एंड बैड थॉट्स विल अट्रैक्ट बैड things in our life. The only way to manifest something in your outer world is to improvise and amend your inner world, which includes your inner vibration, thoughts, and emotions. You will effortlessly attract all the resources that you need to fulfill your desire if you choose to believe, expect, and imagine the right outcome. ऐसा ही है भाई, हमारा ऐसा ही है। कल भी मैं 4 बजे सोया यार। अब मैं जल्दी जल्दी अपने सारे गोल्स कंप्लीट कर रहा हूँ। वी आर ऑन द 14th चैप्टर और लास्ट होगा हमारा 15th चैप्टर, ठीक है। फिर ये बुक ख़त्म हो जाएगी। पहले चैप्टर का नाम चेंज करते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। बी अट्रैक्ट एंड मैनिफेस्ट, ठीक है। तो चैप्टर 14 अट्रैक्ट एंड मैनिफेस्ट। एक सेकेंड भाई, आज इवनिंग में हम लोगों ने प्लान बनाया है कि अंकित और मैं आपसे मिलने का। ओके अंजू आर्य जी, और ठीक है मैं बता दूंगा आपको। आज मैं स्टेडियम जा रहा हूँ मोम के साथ, पर शाम तक मोस्टली मैं फ्री हो जाऊंगा, तो ठीक है हम लोग मिल सकते हैं तो कॉल कर लेना,
ठीक है, मैं स्टेडियम से 6 बजे तक आ जाता हूँ, 6 साढ़े 6 तक नहा धो के रेडी हो जाऊँगा, फिर मिल लेंगे आपसे। लाइव ही बैठ जाएं क्या आज तीनों? लाइव गेम खेलें, लाइव गेम, ठीक है। आज कर सकते हैं, अंजू आर्य कह रहा हूँ, निखिल भाई, अंकित भाई और मैं लाइव गेम खेल सकते हैं, ठीक है। चेस खेलेंगे, चेस खेलेंगे क्या? चेस आता है निखिल भाई? चेस खेलना आता है? अगर आता हो तो बताना। Attract and manifest. Whatever belief I am practicing, the law of attraction will validate with evidence. Esther Hicks. Whatever belief I am practicing, the law of attraction will validate the evidence. अब क्या होता है, जो चीज़ पे आप बिलीव करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस चीज़ को वैलिडेट कर देगा, मतलब वो चीज़ आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। आई वॉज क्रेविंग फॉर पास्ता, टू माई सरप्राइज माई वाइफ मेड द सेम फॉर डिनर। एक दिन क्या हुआ, ऑथर ने कहा कि मेरे को ना पास्ता खाने का बड़ा मन कर रहा था। जब मैं घर आया तो मेरी बीवी ने पास्ता ही बना रखा था। तो दैट इज़ द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो चीज़ आपको चाहिए आपने मन में सोचा और वो चीज़ हाजिर हो गई। होता है ना बहुत बार, यार आज मम्मी ने काश वो भिंडी की सब्ज़ी बनाई हो, भिंडी की सब्ज़ी बनाई हो, सोचा हुआ आपने दिमाग में, जब सुबह उठे तो भिंडी की सब्ज़ी बनी होती है ना। आई फेल्ट दैट आई डिजर्व अ प्रमोशन एंड सरप्राइजिंगली अमंग्स्ट अदर डिजर्विंग कैंडिडेट आई गॉट प्रमोटेड। कभी कभी आपको लगता है कि यार काश मेरा प्रमोशन हो जाता, मैं डिजर्विंग हूँ, मेरा काश प्रमोशन हो जाता, और अचानक से आपका प्रमोशन हो जाता है। कभी कभी आप सोचते हो कि भगवान प्लीज़ मैं इस पेपर में पास हो जाऊँ, पेपर में पास हो जाऊँ, प्लीज़ कुछ भी करके इसमें पास कर दो। आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाते हो जिसमें फेल होना था, बाकी सब में फेल हो जाते हो। तो इसलिए मांगना भी है तो थोड़ा स्मार्टली मांगना है। बोलो सब में पास कर दो। एक व्लॉग बना दो, हाउ टू प्ले चेस। हाँ हाँ हाँ, हाउ टू प्ले चेस ऑनलाइन, ठीक है ठीक है, खेल सकते हैं, लाइव खेलेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। एक पल भी वेस्ट नहीं करना है। वी विल यूटिलाइज एंड टेल एवरीवन टू प्ले चेस, क्योंकि उससे भी दिमाग बढ़ता है, ठीक है। हर चीज़ अब लाइव ही करेंगे। तो आज आ जाना, ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, दोनों का दिमाग और मेरा दिमाग, ठीक है। देखते हैं निखिल और अंकित जीत पाएंगे मुझसे या नहीं। आई वॉज लुकिंग फॉर अ चेंज इन माई जॉब एंड आउट ऑफ ब्लू इट was offered to me. Do you resonate with any of the above statements? You thought about something and you got it. And when it happened, did you brush it off or a coincidence or a miracle? अब क्या है, do you resonate with any of the above statements? You thought about something and you got it. कभी ऐसा सोचना, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो और आपने पा लिया हो। अब जैसे निखिल भाई है, निखिल भाई ने बोला कि भाई यार आज शाम को हम लोगों ने प्लान बनाया है कि आप मिलोगे, तो मैंने बोला हाँ आज मैं फ्री हूँ। तो आपने सोचा था कि काश भैया फ्री होते, और आज भैया फ्री हैं, देखो लाइव एग्जाम्पल। Well, if you take a closer look at the sequence of events happening, it is nothing but the law of attraction at work. You wished for something and it manifested in your life. कुछ चीज़ आप सोचते हो और वो चीज़ आपके सामने आ जाती है। That is law of attraction. The process of attracting things and circumstances happens so harmoniously that you may spend your entire life without noticing it. अब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपके कहने पर हो रही है, पर आपने कभी सोचा ही नहीं है। Once you use your conscious mind to observe your thoughts and reality, you will understand how the process of attracting thing works. जब आप इस चीज़ को समझोगे, गहराई से देखोगे ना, तो आप सोचना मोस्टली चीज़ें वही हो रही है जो आपके कहने पर हो रही है। आपने देखो, अगर एक बार आप कभी रेस में हारे होगे तो आपने खुद क्या बोला कि यार नहीं कंपटीशन बहुत टफ है, कंपटीशन बहुत टफ है। तो आप अपने जो सपने को है वो खुद ही निग्लेक्ट कर रहे हो, कह रहे हो कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चीज़ पे बिलीव करता है जो आप मानते हो। अगर आपने ठान लिया है कि आई कैन बिकम अ नंबर 1 एथलीट, आई कैन बिकम अ नंबर 1 फुटबॉलर, जो भी मान लिया है, तो वो काम करके देगा। तो बस उसके हिसाब से एक्शंस रखिए, ठीक है। रोज़ स्टेडियम जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, क्यों नहीं बनोगे? कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। पर हम लोग क्या करते हैं, 1 महीना जाते हैं, फिर 2 महीने पढ़ाई करते हैं, फिर 1 महीना जाते हैं, फिर 2 महीना पढ़ाई करते हैं, फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं आया, हम नहीं बन सकते।
I once read a beautiful story that goes like this. Dr. Ahmed, a well-known cancer specialist, was once on his way to an important conference in another city where he was going to be conferred with an award in the field of medical research. It was very excited to attend the conference and was anxious to reach the venue ahead of time. He had worked long and hard on this research and he felt that his efforts deserved the award he was about to receive. However, how hours after the plane took off, it made an emergency landing at the nearest airport due to some technical snag. अब क्या हुआ? एक बार फिर से पढ़ते हैं. आई वंस रीड अ ब्यूटिफुल स्टोरी दैट गोज लाइक दिस. एक ब्यूटिफुल स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं. डॉक्टर अहमद, अ वेल नोन कैंसर स्पेशलिस्ट, वॉज वंस ऑन हिज वे टू एन इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस इन अनदर सिटी वेयर ही वॉज गोइंग टू कन्फ्रंट विद एन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिकल रिसर्च. एक डॉक्टर अहमद थे, वो एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे. उनको एक दूसरी सिटी में जाना था एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जहाँ पे उन्हें मेडिकल रिसर्च के ऊपर पुरस्कार भी मिलने वाला था, एक अवार्ड मिलने वाला था. ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस एंड वॉज एनेक्शियस टू रीच द वेन्यू अहेड ऑफ टाइम. वो कॉन्फ्रेंस को कॉन्फ्रेंस से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि भाई अब तो कॉन्फ्रेंस होगी, मज़ा आएगा. और वो चाहते थे कि बस मैं पहुंच जाऊं टाइम से पहले. He had worked long and hard on his research and he felt his effort deserved the award he was about to receive. However, 2 hours after the plane took off, it made an emergency landing at the nearest airport due to some technical snag. अब क्या हुआ? कुछ टेक्निकल स्नैग हुआ जिसकी वजह से वो प्लेन को बीच में ही रोकना पड़ा. Afraid that he wouldn't make it in the time of the conference. अब क्या हुआ कि इससे वो डॉक्टर टाइम पे तो नहीं पहुंच सकता था क्योंकि प्लेन बीच में कहीं रोक दिया. डॉक्टर अहमद immediately went to the reception to check for other flights. To his dismay, he found that next flight to the destination was after 10 hours. This meant he would be late for the conference. The receptionist suggested that he rent a car and drive himself down the conference city, which was only 4 hours away. Having no other choice, he agreed to the idea. Though he did not really enjoy driving long distances, Dr. Ahmed rented a car and started his journey. However, soon after he left, the weather suddenly changed and a heavy storm began. The heavy rains made it very difficult for him to see ahead and he missed a turn he was supposed to take. अब क्या हुआ? जब उसका प्लेन रुक गया तो अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था. दूसरी फ्लाइट के लिए पूछा तो 10 घंटे का समय था. अब क्या करता वो, उसे समझ ही नहीं आ रहा क्या करना. तो उसका जो वो था सेक्रेटरी, वो कहता है कि सर आप ऐसा करो, यहाँ से सॉरी रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि आप यहाँ से गाड़ी से चले जाओ, रेंट करो एक गाड़ी और वहाँ से ड्राइव करके चले जाओ, 4 घंटे का ही रास्ता है. उसने कहा ठीक है यही करके देख लेते हैं. तो उसको लॉन्ग डिस्टेंस में गाड़ी चलाना पसंद नहीं था, फिर भी उसने चलाई और अचानक से मौसम ख़राब हो गया, हैवी रेंस होने लग गई जिसकी वजह से उसे एक कट लेना था सिटी के लिए, वो ले नहीं पाया और वो कट मिस हो गया. और आप देखते हैं क्या होता है आगे. आफ्टर मोर देन 2 hours ऑफ ड्राइविंग ही रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे. अब क्या हुआ? 2 घंटे की लगातार ड्राइविंग से उसे पता चल गया कि मैं रास्ता भटक गया हूँ. ड्राइविंग इन द हैवी रेन ऑन अ डेजर्टेड रोड एंड फीलिंग हंग्री एंड टायर्ड, ही frantically began to look for any sign of civilization. After some time, he finally come across a small tattered house. Desperate, he got out of the car, knocked on the door. The beautiful lady opened the door. He explained the matter to her and asked her if he could use her telephone. अब क्या हुआ? अब बीच रास्ते में उसे क्या हुआ कि उसको भूख भी लग रही थी, वो भी लग रहा था और उसको कोई साइन नहीं दिख रहा था सिविलाइजेशन का, कोई आसपास रहने वाला नहीं था. फिर अचानक से वो उसको दिखता है घर, तो वहाँ पे वो रुकता है और फटाफट से गाड़ी रोक के नॉक करता है दरवाजे को. दरवाज़ा खुलता है, एक बहुत ही प्यारी सी लेडी उनके सामने होती है. तो वो पूरा मैटर एक्सप्लेन करता है कि मेरे को आज यहाँ जाना था, वहाँ जाना था और मैं पहुँच नहीं पाया हूँ, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ. However, the lady told him that she didn't have a phone or an electronic gadget, but said that he could come inside till the weather improves. लेडी ने कहा मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो नहीं है, बट आप अंदर आ जाइए, जब तक मौसम ठीक नहीं होता तब तक आप यहाँ रह सकते हैं. Hurry, wet and exhausted, the doctor accepted her kind offer and walked in. The lady served him a cup of hot tea and something to eat. She excused herself and told Dr. Ahmed that it was time for her prayers, that he could relax until the rain settled. Dr. Ahmed smiled and the lady in affirmation.
He was a skeptic and believed only in hard work. Sitting on a table and sipping the tea, the doctor watched the woman in the dim light of the candles as she prayed next to what appeared to be small baby in crib. Every time she finished a prayer, she would start another one, feeling that the woman might be in need of help. The doctor seized the opportunity to speak to her as soon as she finished her prayer. He asked her what exactly she wanted from the God, whether the Lord would ever listen to her prayers. He further inquired about the small child in the crib for whom she was apparently praying. With a sad smile, she said that the child in the crib was her son who was suffering from rare type of cancer and that there was only some specialist doctor called Dr. Ahmed who could cure him. But she didn't have the money to afford his fees and moreover Dr. Ahmed lived in the other far town. She said that the Lord had answered all her prayers so far and that she was sure that he would answer this one as well. She added that she would not allow her fears to overcome her faith. भाई साहब गूज बम्स आ गए स्टोरी सुन के. मतलब क्या हुआ, वो डॉक्टर एक बीहड़ जगह में एक लड़की के घर रुकता है, वो भी एक्सीडेंटली, क्योंकि उसको लग रही थी भूख और वो रास्ता भटक चुका था और उस लेडी ने उसको हॉट कॉफ़ी पिलाई, सब कुछ पिलाया. फिर एक बार क्या हुआ, जब वो उसने कहा आप तब तक बैठिए, तब तक रुकिए जब तक ये मौसम ठीक नहीं हो जाता. और पता है क्या बात हुई, सबसे अच्छी बात ये हुई कि वो जब प्रे करने लगी तो डॉक्टर देखता है कि अच्छा ये प्रे कर रही है. डॉक्टर कहता है यार मैं तो अपने हार्ड वर्क पे बिलीव करता हूँ, प्रे व्रे चलो जैसा भी है बट आई बिलीव इन माई हार्ड वर्क और हार्ड वर्क से ही सारी चीज़ें हासिल होती हैं. तो वो प्रे करती है और एक बार करती है, ख़त्म होती है, फिर से प्रे करती है, फिर से ख़त्म होती है, फिर से प्रे करती है. तो वो डॉक्टर देखता है कि यार कुछ तो बात है, कि मतलब इतना प्रे कर रही है, इसको कुछ ना कुछ तो नीड है, तो चलो इसका बात करते हैं, बात करके निकलवाते हैं कि चाहिए कैसे भगवान से जो इतना प्रे कर रही है. तो वो कहती है कि ये जितनी भी प्रेयर मैं कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ क्योंकि उसको एक रेयर टाइप की बीमारी है, कैंसर है, जो कि एक डॉक्टर अहमद नाम का ही शख्स सही कर सकता है. वो स्पेशलिस्ट हैं पर वो दूसरी सिटी में रहते हैं और मेरे पास उनको देने के लिए फ़ीस नहीं है, तो मैं बस भगवान से प्रे कर रही हूँ कि किसी तरह वो इसको क्योर कर दे. भाई मतलब डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं कि मतलब भगवान ने इसकी प्रे सुन ली. मतलब डॉक्टर अहमद खुद उसके घर चल के आए, वो भी कैसा कैसा, मतलब मौसम ख़राब होना, उसकी फ़्लाइट छूट जाना, कार से ड्राइव करना, रास्ता भूल जाना, सब चीज़ देखो कैसे कैसे करके उस डॉक्टर को उस लेडी के घर तक ले आई. दैट इज़ द पावर ऑफ प्रेयर्स एंड बिलीव. Dr. Ahmed lived in another part of town. She said the Lord had answered all her prayers so far and that she was sure that he would answer this one as well. She added that she would not allow her fears to overcome her faith. Stunned and speechless, Dr. Ahmed was in tears. He whispered, God is great. He recollected the sequence of events that led to their meeting. There was a malfunction in the plane. A thunderstorm struck and he lost his way. डॉक्टर मतलब स्पीचलेस हो गया, उसकी आंखों से आंसू आने लग गए और उसके मुंह से बस एक ही चीज़ निकली, द गॉड इज़ ग्रेट. एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंड बिकॉज द लॉर्ड हैड टू आंसर हर प्रेयर्स. ये सब कुछ हुआ क्योंकि भगवान ने उसकी प्रेयर्स का आंसर दिया है. देयर इज़ अ ग्रेट लेसन टू बी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी. आस्क, बिलीव एंड रिसीव. इससे आपको सीखना चाहिए आस्क, बिलीव और रिसीव. पहले आस्क, मांगिए कि आपको क्या चाहिए, देन उसके बाद उस पर बिलीव करिए, अंधा बिलीव उसके लिए काम कीजिए एंड रिसीव इट. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज़ योर अनशेकेबल फेथ इन वॉट यू आस्क फॉर दैट विल अल्टीमेटली ब्रिंग यू वॉट यू आस्क. तो अब क्या बोला है कि आप ना कुछ भी करो, आपका जो फेथ है वो हिलना नहीं चाहिए. वॉट यू आस्क फॉर दैट विल अल्टीमेटली ब्रिंग यू वॉट यू आस्क. Often we start with a positive mind saying, I am going to receive what I wish for. But as time passes, our faith turns into doubt and we start questioning ourselves, wondering, is this really going to happen? As soon as the doubt sets in, the law of attraction loses its power. तो law of attraction अपनी पावर को लूज कर देता है जब हम उसको क्वेश्चन करते हैं, इज दिस रियली गोना हैपन. तो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं तो फिर हम लोग डाउट कर रहे हैं. द सीक्रेट ऑफ manifestation lies in the feeling about thing you wish to manifest in your life. The secret of manifestation क्या है? जब आप फील करते हो उस चीज़ को जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, अगर आप उसके लिए फीलिंग नहीं है तो फिर कैसे वो मैनिफेस्ट होगा.
Whenever you desire something and you feel good about it, you are feeding the thought with positive energies of love, joy, peace, abundance, and success. These vibrations give begin to multiply, with which which then brings what you desire into your life. On the other hand, if you have feelings of guilt, worry, disappointment, resentment, fear, insecurity, doubt, hesitation, sadness, you emit those vibrations which will attract negative situation in your life. The law of attraction says that like attraction like, so it means that positive thoughts will attract positive things in your life, while negative thoughts will attract negative things. Whatever you focus on grows. It is of vital importance to understand that your thoughts will shape in your reality. Our mind is like a mirror, it will reflect whatever we think. The greatest secret of manifesting is realizing that every small thought, even those that may seem unimportant, contribute to shaping our lives and manifesting our desires. What you wish to attract in your life may come to you instantly, and you might call it a miracle, or it may come indirectly through various stages where one incident, event, or throughout may lead to another, helping you eventually reach an end result. As I mentioned earlier, I desire to be rich and hence wanted to become a doctor. जैसे कि इसने बताया था कि मैं अमीर बनना चाहता था, मैं रिच बनना चाहता था और मैं डॉक्टर बनना चाहता था. Well, that did not happen, and while the sequence of events seems random, they were beautifully waved together to ultimately help me to reach my goal. Here are a few tips to attract and manifest your desire in your life based on my personal experience. तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हमें कुछ गाइड करना चाहते हैं. Once you desire something, make sure that your desire is strong and that you are motivated and committed enough to make it happen. तो जो आप डिज़ायर करते हो कोई भी चीज़, तो मेक श्योर कर लो कि आप उसके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो एंड कमिटेड हो इनफ टू मेक इट हैपन. इतने ज़्यादा कमिटेड कि आप उसे पूरा कर सको. विजुअलाइजेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आपका विजुअलाइजेशन, आपको दिमाग में सोचना है कि आप कैसे लगोगे जब आप एक नंबर वन यूट्यूबर बन जाओगे, या फिर नंबर वन स्पोर्ट्स पर्सन बन जाओगे, नंबर वन एथलीट, गोल्ड मेडल इन पेरिस ओलंपिक, कुछ भी है ना. उस चीज़ को पहले दिमाग में फील करना है. इफ़ यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज द फाइनल प्रोडक्ट, डेवलप द हैबिट. अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उसे डेवलप करो. यू नीड टू persistent, disciplined, and focused. A restless mind cannot achieve things. A restless mind cannot achieve anything. Once you desire something and send the message to the universe, the process starts. The universe will present opportunities in front of you from the time to time. You need to be ready to take advantage of them. It is important to take action when you receive signals such as a phone call, a job offer, a gut feeling, or advice from somebody that strikes a chord within. Having experienced the power of belief and attraction, I started using it consciously in my life. Our mentors Kanti and Lata and moved to Manalpan, New Jersey when they bought their house and we visited them there. I said to Kanti, I will buy a house next to yours so that we can be neighbors. But at that time, the house next door was under construction and was already sold. However, it just so happened that the person who had bought that house then backed out. The builder tried to sell it again, but he did not succeed. Kanti called and asked me whether I would be interested in buying that house. How could I let go of this opportunity? The deal was done, but I needed to sell the house we were living in to be able to pay for that one. The real estate agent told me not to mention this to the builder as it might affect the deal. I told him not to worry and that I would sell our existing house the very same day. I had absolutely no clue what that was going to happen. I called the real estate agent in that area and the response was quite disappointing. She said that the chances of our house getting sold were very bleak as no sales were happening in our area. अब क्या हुआ एक बार फिर से पढ़ते हैं. Kanti called and asked me whether I would be interested in buy that house.
How could I let go of this opportunity? The deal was done, but I needed to sell the house we were living in, the able to pay for that one. अब क्या, वो जो उसे घर लेना था वो अचानक से उसे मिल रहा था, वो भी बहुत कम दाम में, बट उसके लिए उसे अपना घर बेचना था, क्योंकि पैसे तो तभी आएंगे ना जब वो अपना घर बेचेगा और फिर नया घर लेगा. द रियल स्टेट एजेंट टोल्ड मी नॉट टू मेंशन दिस टू द बिल्डर एज इट माइट अफेक्ट द डील. आई टोल्ड हिम नॉट टू वरी एंड दैट आई वुड सेल आवर एग्जिस्टिंग हाउस द वेरी सेम डे. और उसने सेम डे में अपना घर बेच दिया. आई हैड एब्सोल्युटली नो क्लू हाउ दैट वॉज गोइंग टू हैपन. आई कॉल्ड द रियल स्टेट एजेंट इन दैट एरिया and the response was quite disappointing. She said the chances of our house getting sold were very bleak. No sales were happening in our area. हमारे एरिया में कोई सेल्स नहीं हो रही है, तो बहुत मुश्किल है कि हम लोग कुछ कर पाएंगे. भाई टुमारो इज एशिया रेसलिंग चैम्पियनशिप स्टार्ट्स. क्या बात है. ओके ब्रदर, उसका स्कोर कार्ड मिलेगा तो ज़रूर लगाएंगे, या फिर यूट्यूब पे आएगा तो उसकी लाइव कमेंट्री कर सकते हैं. The same evening, Meena received a phone call from one of our old friends who had been out of touch for a long time. They spoke for a while and she hung up the phone. Meena later realized that this friend had mentioned a while back that they were looking for a house in the area where we currently living. She called her back and asked her if they were still looking to buy a house because we were planning to sell ours. They were still in the market, and deals was closed on the phone the same day. Everything fell into the place and we bought our dream home. This is how the power of belief, expectations and imaginations miraculously works. If you believe in something, you attract the things, resources and people in your life that will help you achieve your goals. अब क्या होता है? This is how the power of belief, expectation and imagination miraculously works. If you believe in something, you attract the right resources and right people in your life that will help you achieve your goals. तो उसका सेम डे में घर बिक भी गया. The same evening, Meena received the phone call from one of our friends who had been out of touch for a long time. They spoke for a while and she hung up the phone. Meena later realized that this friend had mentioned a while back that they were looking for a house in the area where we currently living. She called her back and asked her if they were still looking to buy a house because we were planning to sell ours. They were still in the market and the deal was closed on the phone the same day. Everything fell into places. We bought our dream home. तो क्या हुआ, देख रहे हो, अचानक से क्या हुआ कि उसके दोस्त ने कॉल किया जो कि उससे बहुत टाइम से दूर था. उसकी वाइफ को कॉल किया और उसकी वाइफ से बात की और फ़ोन काट गया. फिर उसके बाद उसकी वाइफ को याद आया कि यार इसने बहुत सालों पहले कहा था कि मुझे आपके एरिया में घर चाहिए, अगर मिल जाए तो बताना. और अब फाइनली क्या हुआ, वो अपने एरिया को छोड़ के जा रहे थे, अपने घर को छोड़ के जा रहे थे, तो उनने बोला कि फिर दोबारा कॉल किया उसकी वाइफ ने और बोला कि यार हम अपना घर बेच रहे हैं, क्या आप ख़रीदना चाहोगे. वो खुश हो गई, हाँ हाँ तुरंत उसने सेम डे पे डील बुक की और बोला कि हम पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप घर ट्रांसफ़र करो. तो इन अ नटशेल, आस्क, बिलीव एंड रिसीव. द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ योर अनशेकेबल फेथ in what you ask for that will ultimately bring you what you ask. It is of vital importance to understand that your thoughts will shape your reality. आपके thoughts ही हैं जो कि आपकी reality में बदलेंगे, जो कि आपकी reality को shape up करेंगे. The secret of manifestation lies in your feelings about the thing you wish to manifest in your life. Whatever you want to manifest, no matter how big or small it may be, it has to manifest when you believe in it. Expect it to happen and imagine having it now. There is no difference in the process to manifest big dreams and compared to small dreams. Both are the same to the universe. It's your thought to make it hard or easy. या आपका थॉट है कि आप उसे हार्ड बनाते हो, इजी बनाते हो. देयर इज नो डिफरेंस इन द प्रोसेस टू मैनिफेस्ट बिग ड्रीम्स और कंपेयर टू स्मॉल ड्रीम्स. बड़े सपने हो या छोटे सपने हो, आप दोनों को अचीव कर सकते हो, बट ये चीज़ आपके अंदर है कि आप उसे कितना हार्ड बना रहे हो, कितना मुश्किल बना रहे हो, वो आपके ऊपर है. चैप्टर 15, ट्रस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट. we are discussing the 15th chapter and this one is the last chapter. और ये फिर बुक ओवर हो जाएगी मेरे दोस्तों. ये बुक का अंत निकट है. हाँ नहीं होगी. ओह माय गॉड, 60% पीपल आर टेलिंग दैट नहीं होगी. अरे आज ख़त्म करके दिखाएंगे. तो अभी भी मौका है, वोट चेंज कर लो.
वी आर ऑन द 15 चैप्टर और पेज नंबर है ये 146 और 164 पे किताब खत्म है. वॉच योर थॉट दे बिकम वर्ड्स, वॉच योर वर्ड दे बिकम एक्शंस, वॉच योर एक्शन दे बिकम हैबिट्स, वॉच योर हैबिट्स दे बिकम कैरेक्टर, वॉच योर कैरेक्टर फॉर इट बिकम्स योर डेस्टिनी. तो हमेशा याद रखो, अपने थॉट्स के बारे में सोचो क्योंकि वो कल वर्ड्स बनेंगे. आप वर्ड्स को ध्यान से बोलो क्योंकि वो एक्शंस में कन्वर्ट होंगे. एक्शंस को ध्यान से करो वरना वो हैबिट्स बन जाएगी. हैबिट्स को अच्छे से करो वरना वो कैरेक्टर बन जाएगा. कैरेक्टर को संभालो वरना वो आपकी डेस्टिनी बन जाएगी. ये लिखा है उपनिषद्स में. उपनिषद्स. ट्रस्ट एंड एक्नॉलेज. Say that you are working for an organization and your boss say assign you some work. आप एक organization के साथ काम कर रहे हो और आपके boss ने आपको कुछ काम दिया है. You know you are good at it and can successfully accomplish the given work. You begin the job, but intermittently your boss comes to questions you. Hey, would you be able to do it? How long would you take to do it? आपके पास आपका बॉस आता है, वो कहता है आपने काम शुरू किया बट इंटरमिटेंटली योर बॉस कम्स एंड क्वेश्चन यू कि आप क्या आप ये काम कर पाओगे, कि कितना टाइम लगेगा अगर कर पाओगे तो. व्हेन ही आस्क यू दीज क्वेश्चंस हाउ वुड यू फील, आपको कैसा फील होगा? प्रोबेबली इरिटेटेड, राइट? यू थिंक व्हाई कांट ही ट्रस्ट मी. However, suppose your boss trusts you completely about the assignment he had given you, you would most likely happily and easily complete it in time. If your boss also acknowledges and is grateful for the work that you have done, you would feel like doing more good work the next time. In the same way, when you ask the universe for something that you know it capable of creating, if you continually doubt its creative work, you will be sabotaging its efforts. Sabotaging means destroying its efforts. But if you instead trust that it will do its work for you and if you acknowledge those efforts in the process, what you want will easily come to you. अगर आपने मान लिया कि यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा आपको चीज़ें अचीव करने में, तो वो ज़रूर करेगा. जैसे बॉस होता है ना कि बॉस ने आपको कह दिया कि भाई तू अच्छा काम करता है, ये करता है, तो आप अगली बार और अच्छे से मेहनत करते हो ताकि आप वो एक्नॉलेजमेंट फिर से पा सको अपने बॉस से. तो वैसे ही यूनिवर्स भी, अगर आप यूनिवर्स पे डाउट करोगे तो वो आपकी कभी भी मदद नहीं करेगा. बट यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, ही विल हेल्प यू. वो हमारे साथ है, हमारी हेल्प करने के लिए ही तो है. ट्रस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट आर द की टू अलाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू वर्क फॉर यू. ट्रस्ट और एक्नॉलेजमेंट दोनों चीज़ें आपको करनी है, तब जाके ये यूनिवर्स आपकी मदद कर पाएगा. द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इनफेलिएबल. इनफेलिएबल है आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कभी फेल नहीं होता. एज सून एज यू आस्क फॉर समथिंग द यूनिवर्स गोज इनटू एक्शन. जो भी आप मांगते हो इस दुनिया से वो एक्शन में बदल जाता है. इट स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोसेस टू गेट द डिजायर्ड थिंग टू यू. Why does it not always happen? Perhaps we are blocking or resisting it from coming our way, consciously or unconsciously, and this happens mainly due to lack of trust. It is important to trust that what you have asked for is yours and that the universe will respond to the continual positive thoughts with positive results. You need to think, act, and speak in the present tense as thought your request has been granted. When you combine this faith in the universe with feelings of gratitude and visualization, you truly are multiplying the power of the law of attraction. Every positive step taken in the faith and trust will lead to the manifestation of truly magnificent things. The belief that your firm also apply an important role when it comes to trust. I always believed that whenever I need money, it would be provided. This belief was implanted in me by my mother, who would always say, in your life, you may wake up hungry, but you will never go to bed hungry. Trust me on this. This is an important belief that not only helped me build trust, but also miraculously worked for me during every stage in my life. I would likely to share an incident from my life that is testimony to this. It happened when I was working at Citibank. I had just gotten married and Meena and I were still working hard towards our goal. At that time, back in India, my elderly brother
had his own business. Unfortunately, the business didn't do so well and he suffered great losses. In India, people generally think that if you have a relative working in America, they should be earning very well and can support you. अब इंडियन पीपल का क्या सोचना है कि जो लोग बाहर काम करते हैं, अमेरिका में जगह काम करते हो, तो वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं. One fine day, I got a letter from my brother saying that he needed some amount of money. The amount my brother needed was greater than my annual income. जो पैसा उसे चाहिए था वो उसकी एनुअल इनकम से भी ज़्यादा था. I didn't have that kind of money at the time. However, I promised to help him, even though I didn't really know how. I had complete trust in my law and belief and law of attraction. I was confident that I would be provided with that money. I left the how and when to the universe. वो उसे नहीं पता था वो इतनी बड़ी रकम अपने भाई को हेल्प करने के लिए कैसे जमा करेगा, तो उसने कहा कि मैंने हाउ और व्हेन छोड़ दिया यूनिवर्स पे. बस मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं अपने भाई को ये रकम दूंगा, मुझे नहीं पता कैसे बट मैं दूंगा. अ फ्यू डेज लेटर माई बॉस कॉल्ड मी टू हिज ऑफिस एंड सेड, कुलिन, we are in the process of going through the accounts and salary structure of our employees, and we noticed that you were promoted last year and we never raised your salary, so here's the check for your unpaid dues. क्या बात. उसको उसके ऑफिस में जाके पता चलता है कि उसके ऑफिस वाले कहते हैं कि यार देखो, आपकी प्रमोशन पिछले साल हो गई थी बट आपकी सैलरी हमने बढ़ाई नहीं, हमने अभी ध्यान दिया, तो जो भी आपका अनड्यू था वो सब आपको पैसा दे देते हैं. So I had never thought about a raise since I was happy with the work and experience that I was getting, but my boss was afraid that I might leave the jobs and go elsewhere if my salary did not match my position. I was amazed at the timing at which this happened. The money I received was the exact amount I needed to send back home to my brother. तो उसके पास उतनी अमाउंट आई जितनी उसके भाई ने मांगी थी. I attracted the resources because of my belief. This is how the universe works. बिलीव करिए वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी जैसे भाई के पास आई. मैनी से दे हैव कंप्लीट ट्रस्ट. बहुत लोग कहते हैं मेरे पास कंप्लीट ट्रस्ट है, बट द अंडरलाइंग फीलिंग्स कुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट. पर जो अंदर से है वो फीलिंग डिफरेंटली आती है. आपको मैं सच बताऊं तो एक क्रिप्टो करेंसी थी, क्रिप्टो करेंसी शिबा इनू. आई टोटली इन्वेस्टेड इट. मैंने 5,000 रुपये लगाए थे और सब ने कहा था भाई फेक हो सकता है, फेक हो सकता है और ये स्कैम भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में बहुत स्कैम होता है. तो वो करके करेंसी बहुत उस टाइम पे वो भी आया था, क्या बोलते हैं, क्रैश हुआ था, बिटकॉइन क्रैश हुआ था और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा गिर गई थी. बट फिर भी मैंने उसे बाई किया, कम दाम में भी बाई किया और बाई किया. आई टोटली इन्वेस्टेड 5,000 रुपीज़. और उसके बाद अचानक से क्या हुआ, विद इन 3 और 4 मंथ्स इट विल बूम. मतलब सॉरी, वो बूम हो गई. और जब वो बूम हुई तो 2,000 5,000 का सीधा 20,000 हो गया. सो बिलीव था हर जगह. मैंने वही लगा दिया था कि शिबा इनू उठेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और वो उठा और काफ़ी अच्छा खासा उठा. द बेस्ट वे टू मेजर द ट्रस्ट इज़ टू एग्जामिन आवर फीलिंग्स. फीलिंग्स आर अ थॉट मेजरिंग डिवाइस. टेल अस exactly what we are thinking and what frequency our thoughts are on in an instant. If you feel great, positive as thought, you have already received what you desired for. It means you have full trust in the process. The law of attraction is completely based on positive thoughts. जो ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल आपके पॉजिटिव थॉट्स पे बिलीव करता है. इवन अ सिंगल नेगेटिव थॉट विल रिड्यूस इट्स पावर. एक सिंगल थॉट, नेगेटिव थॉट उसकी पावर को कम कर सकता है. Hence, the where and when and how of the manifestation should be totally left to the universe. How, when, where, ये कैसे होगा, ये सब यूनिवर्स पे छोड़ दो. आप बिलीव करना सीखो. Handle. You should feel very happy and comfortable with that which you aspire for. The need to control or that you must go through suffering to be rewarded are negative beliefs so deeply ingrained in us since our childhood that they require some serious mental effort to overcome. We form many limiting beliefs based on our past experiences and our current reality. We will never be able to attract what we want if we want thinking these strong negative beliefs. हम अपने बिलीव को लिमिट करके हम कभी भी नहीं पा सकते कुछ. अपने बिलीव्स को भाई लिमिट मत करो, उसे सोचने दो. जो आप चाहते हो वो कर सकते हो. डू नॉट लिमिट योर सेल्फ. द की इज टू कन्वर्ट द लिमिटिंग बिलीव इन टू एम्पावरिंग वंस. द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ प्रोसेस. लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक प्रोसेस है. एज योर अवेयरनेस एक्सपैंड, योर एटीट्यूड शिफ्ट. एम्पावरिंग बिलीव्स
become more dominant. जब आप बिलीव में फोकस करोगे तो वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएंगे एंड योर एक्सपीरियंस विल स्टार्ट टू इम्प्रूव, और आपका एक्सपीरियंस और इम्प्रूव होगा. The second most important key to attract anything that you desire in your life is gratitude. Be thankful for everything. That is the second most important key to attract anything that you desire in your life is gratitude. How does it feel to how does it feel to when someone appreciates and thank you for everything you do for them? You feel great and positive, don't you? When writing official letters, when we have to request for the favors, we write thanking you in anticipation. This means that we are expressing our gratitude towards the person even before our work is done. This also applies to the universe. The law of attraction says that we should express gratitude for the things we have asked for as if we have already received it. ठीक है. If a person does have abundance but does not show gratitude, he will eventually lose it. This is because he is telling the universe that he does not deserve it. When the universe perceives this, it stops delivering. ठीक है. When the universe perceives this, it stops delivering. अब क्या होता है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, उसके बाद भी वो ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाते. ही विल इवेंचुअली लूज इट. जो उनके पास सब कुछ होता है वो लूज कर देते हैं. दिस इज बिकॉज ही इज टेलिंग द यूनिवर्स दैट ही डज नॉट डिजर्व इट. वो दुनिया वालों को बता रहा है कि आई डोंट डिजर्व इट. क्योंकि जब आप किसी को थैंकफुल नहीं होगे तो फिर कैसे चलेगा. व्हेन द यूनिवर्स परसीव दिस, इट स्टॉप डिलीवरिंग. तो वो जब यूनिवर्स आपको दे रहा होता है फिर वो रोक देगा और आपको नहीं देगा. ऑन द अदर हैंड, इफ अ पर्सन लैक्स अबंडेंस बट शोज ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट ही हैज़, तो देखो जिसके पास कभी कुछ होता नहीं है और फिर भी वो थैंक्स करता है जो भी उसके पास है उसके लिए, तो उसको यूनिवर्स कहता है कि भाई ये है बंदा, इसको दो. यूनिवर्स विल इन टर्न गिव मोर ऑफ व्हाट दैट पर्सन विशेस. आपको वो चीज़ और देगा अगर आप लोगों के लिए ग्रेटफुल हो, ग्रैटिट्यूड दिखाओगे तो. इफ़ यू आर थैंकफुल फॉर द पर्सन हु हेल्प्ड यू, तो यूनिवर्स आपकी ज़रूर सुनेगा. इफ़ अ पर्सन बोथ लैक्स abundance and does not show gratitude, he will continue to live in that way because he has not shown that he deserves more. ठीक है. Whenever you feel good about a certain thing in your life and you acknowledge it, a highly positive vibration is created which attracts more and more positive things in your life. Remember that when you are consciously aware of your blessing and are grateful for them, you are focusing more clearly on what you do and you are attracting more of those things into your life. Gratitude is more than just being thankful. It is a way of life. It is a conscious choice to focus on the blessings of life rather than the complain about shortcoming of or problems. Remember that whatever you focus on grows, expands and multiplies in your life. You may practice some affirmations of gratitude such as the following. I am grateful for all the comforts in my life. I am blessed to have such wonderful and loving people in my life. I am grateful for the home that I live in. I am grateful for that I am alive. सब चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, थैंक्स बोलना है. द लिस्ट इज़ एंडलेस. बहुत मॉम के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, इस देश में रहने के लिए, इस देश में सांस लेने के लिए, हाइड्रोजन के लिए, कार्बन के लिए, सबके लिए हेल्प, मतलब सबके लिए आपको ग्रैटिट्यूड होना चाहिए. After all, we have so much to be grateful for. I have never made a habit to list all things that I am grateful before I go to sleep. This keeps me up in positive frames of mind no matter what makes has happened throughout the day. If you desire wealth in your life, be grateful for what you have, even if you don't have enough. If you don't have enough, if you desire good relationship in your life, be aware of the loving and caring people around you. Thanks them for being there for you and thank the universe for surrounding you with such people. You will attract more of them. Count your blessings and you will be blessed, and see how the law of attraction starts working magically for you. ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ. हाँ. In a nutshell, trust and acknowledgement are the key to allow the law of attraction to work for you.
ट्रस्ट और एक्नॉलेजमेंट आपको देनी होगी यूनिवर्स को, तब जाके वो आपका काम करेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब आप उस पर ट्रस्ट करोगे। It is important to trust that what you have asked for is yours and that the universe will respond to your continual positive thoughts with positive results. The law of attraction is always in the operation and it brings to each person the conditions and experiences that they think about or those which they desire and expect. The law of attraction can help you experience a larger vision than you had ever imagined, and this is done through the power of your own thoughts and feelings. Most of people will never achieve positive results using law of attraction because they do not trust and acknowledge the power of universe. They think positively but deep down their thoughts, words and actions are not in sync with each other. बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो अचीव नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो बाहर से दिखाते हैं कि हम लोग कर रहे हैं, बट अंदर से डीप डाउन वो सेल्फ डाउट करते हैं। नाउ दिस बुक इज अबाउट टू क्लोज। अब क्लोजिंग लिखा है, लास्ट चैप्टर इन क्लोजिंग। इसको क्लोज करते हैं, इस बुक को, बस ख़त्म हो गया है। इन क्लोजिंग में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है ऑथर ने हमारे लिए। कुछ सरप्राइज है क्या? ठीक है, अब देखते हैं। Now that the four laws of success have been revealed, it's important to understand the power of happiness in order to activate those laws. Find the right balance in every aspect of life is the key to happy and content life. It is up to us to seek and find the right balance that works for us. An excess in one area of life and a lack in another will not help you achieve the happiness that you deserve. What good is your wealth is you don't have the right health to cherish it. What good is a long, healthy life without a soulmate or someone to cherish and share it with? The right blend of health, wealth, relationship, and spiritual well being can help you achieve everything that you set out to gain. You will be able to cherish your life in a better manner if you come across the right balance in life. However, you cannot expect the create drastic change in each area all at once or overnight. Take it one step at a time, and if you feel overwhelmed by the process, then it means you need to slow down. That's like running too many programs or on your computer all at the same time, resulting in it crashing. A crash in this case means reverting to your old ways. Focus your attention on one thing at a time. Let me emphasize it one more time. Good habits are hard to develop but are easy to live with. Bad habits are easy to develop but are hard to live with. In essence, you will create massive positive changes in your life by taking very small incremental steps of building new thoughts patterns that centers around new empowering beliefs, expectations by consciously choosing happiness. Start by choosing happiness, then use the four laws success to create life changing beliefs. Stick with it. You are worth it. You matter. Whatever success means to you, go for it. जो भी आपके लिए सक्सेस का मतलब है उसके लिए जाइए, काम करिए. Whatever you set your sights on can be yours by following the steps outlined in the book. आप जो चाहते हो वो पा सकते हो. इस बुक में जो बातें लिखी है उसको पढ़िए थोड़ा ध्यान से. इट्स ऑल अबाउट द जर्नी, सो मेक द जर्नी वन ऑफ फन, हैप्पीनेस एंड ग्रेट एंथुजियाज्म. ये सारी कहानी एक जर्नी की है जो कि जिसमें फ़न है, हैप्पीनेस एंड ग्रेट एंथुजियाज्म है. आप भी अपनी कहानी ऐसे लिख सकते हैं. लेट योर इंट्यूशन गाइड यू. अपने इंट्यूशन को, सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने दीजिए अपने आप को. जो वो कहता है कि हाँ ये कर सकते हो तो करो उसे. टेक एक्शन ऑन योर इंट्यूटिव गाइडेंस. अलाउ द प्रोसेस टू अनफोल्ड the reap the fruits of your desire. Praise for this book. We first met Kulin Desai when we were living in one bedroom apartment in Michigan. Right from that first time we could see that Kulin has a very good understanding of living life with the principle he teaches. Later we have seen him talk about the practice these four laws of success. Not surprisingly, his teaching have helped us
build a large business organization, and move from the humble beginning to what we have today. We are extremely blessed with wonderful family, Ronak 23, Reena 27 and 17. And number one, lifestyle. From one bed room apartment, now we live in fully furnished 14,000 square feet custom built home in prestigious country club on the TPC golf course with all the amenities, home theater, spa, gym, swimming pool, elevator in the home, etc. We remember once we were in a Dallas in Kulin while he was speaking at a major business conference. We got the news that Kulin's house had completely burned down. While any other men would have panicked, we saw that Collins remained completely composed, showing no signs of worry. His reasoning was that there is nothing that will come from worrying about it. He finished his busy business talk as though nothing had happened. Once he was through, he dealt with the situation right there. We could see the complete application of four laws of success, which Collins has so well presented in the book. We are grateful to Collins for all his help, both professionally and personally. We are where we are in life today, thanks to these principles that we learned from him. We are very pleased to be associated with him. We are so glad that this book and the principle talked about here can now help many people as they have helped us in our own life. We are truly blessed and excited to have Colin's teaching available to all through this book. Raj and Sangeeta Shah, Atlanta, GA, USA. अब we are so glad एक और किसी ने लिखा है we are so glad that the four laws of success that Collins Desai has been teaching for well over 2 decades is now available to everyone in an easy to read book format. The application of these four laws, belief, expectation, imagination, attraction, have been instrumental to our success. Consistent application to believe has helped us overcome many difficult and seemingly insurmountable obstacles in business and in life. We learn to develop the right belief systems after we hearing Cullen's talk. We have seen Cullen teach and follow this law to the fullest. It has in turn inspired many of us to apply and follow the belief system of ourselves. चक एंड उमा खलांकिनी डैलस ये भी यूएसए के हैं. अब बात करने वाले वो भी गणेश शेनॉय एंड डेटोरॉइट वो भी यूएसए के हैं. Time flies. It has been 2 decades that I have known Colin Desai. I still remember driving 4 hours from Detroit to Chicago to listen to him speak and learn from his talks. मतलब वो 4 घंटे जाते थे उसको सुनने के लिए और उनकी बातों से कुछ सीख कर आते थे. As they say, it's required highly logical mind to understand the limit of logic. That was the case when I met Colin. It gave me mental comfort that I was doing the right thing and journey would be meaningful. Now looking back, it has been rewarding and well worth it. I am definitely one of the people whom Colin has impacted. आज दोपहर में क्यों पढ़ रहे हो है बुक? ऐसे ही यार मन कर रहा था क्योंकि मुझे रात को एक नई बुक शुरू करनी थी मेरे भाई. आज एक नई बुक शुरू करनी थी इसलिए मैंने सोचा कि दिन में ख़त्म कर देता हूँ इस बुक को. विनीत गुप्ता जी कैसे हो? एक्चुअली मुझे ये बुक ख़त्म करनी थी तो मैंने सोचा अभी लाइव चले जाता हूँ, बुक को ख़त्म कर लेता हूँ क्योंकि बिना लाइव के पढ़ना अब थोड़ा मुश्किल हो गया है. आई हैव बीन ब्लेस्ड टू द कुलिन. अब ये कांत मिरालिया ये भी शिकागो के हैं यूएसए के. आई हैव बीन ब्लेस्ड टू नो कुलिन over the years. He has been a mentor, a guide to me. The principle he teaches have helped us, my family and me and more than I can express. This is not a book. It's a Cullen's research and applying these laws in his life and manifesting prosperity in his and others' lives. Buy this, read it, use it, prosper, buy some more and give them away. That's what I'm going to do. वो क्या कह रहे हैं कि इस बुक को खरीदो, पढ़ो और अच्छे से समझो ये दुनिया काम कैसे कर रही है. During the early days of our journey to becoming entrepreneurs, we had privilege of listening to Cullen's teach his 4 laws of success. It impacted us a lot to identify the teach principle in simple language and add
that principle that can be applied in daily life is amazing. Over the years, we have seen these principles work for us, and as we have shared them with others, we have grown into life these principles. Thank you, Kullens, for being an amazing teacher in our life. ये सब किया, बस थैंक्स ही आ रहा है, ठीक है. तो फाइनली हम लोगों ने ये बुक ख़त्म कर चुके हैं. आई बिलीव दैट कुलिन्स द 4 laws have impacted me positively and helped me because successful entrepreneur Kulin's teaching has empowered me, help others to achieve personal happiness. I appreciate your efforts, patience and example in nourishing me. So this book is closed for now. ख़त्म कर चुके हैं हम एक और बुक. Congratulations guys, congratulations book readers. बिलीव एंड अचीव ख़त्म. शाम को शुरू करेंगे एक नई किताब, नई कहानी. इस बार हम पढ़ने वाले हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. बाय फार द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटन, वॉरेन बफेट. द डेफिनेटिव बुक ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग. ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम अच्छे से, फिर आपके साथ शेयर करेंगे. चलो फिर मिलते हैं. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. थैंक्स फॉर जॉइनिंग द लाइव स्ट्रीमिंग.